Guys, welcome to Travelsheesh. Today we'll take you to the tour of Istanbul, the happening Taksim Square, the marvelous Galata Tower and the colorful district of Balat. So come with us and enjoy the vibrant vibes of marvelous Istanbul. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवलशीश। आज हम हैं गलाता टावर पर और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं 9th फ्लोर पे। I'm enjoying. से रात को इस्तांबुल पहुंचने के बाद हम गए अपने होटल एंटेस अपार्टमेंट होटल, जो कि हमने बुक करवाया था booking.com से, और ये हमें पड़ा तकरीबन 60 यूरो पर नाइट, विच इज़ अ वेरी फाइन एंड वेरी नाइस होटल अपार्टमेंट। डेफिनेटली रिकमेंड यू कि इफ़ यू आर स्टेइंग इन तकसीम तो इस होटल को ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज ये बिल्कुल ही तकसीम स्क्वायर से 300 मीटर्स पर है। तो बाहर निकलते ही आपको सारी शॉप्स एंड सारा एरिया रीचेबल है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बाकी यू कैन चेक द अदर डिटेल्स फ्रॉम booking.com। तो हमने भी अपना वॉक टूर स्टार्ट किया टुवर्ड्स द हैपनिंग तकसीम स्क्वायर। उसके बाद हमने जाना था गलाता टावर और एंड करेंगे हम अपनी इस वीडियो को बलात डिस्ट्रिक्ट पे, विच इज़ द वेरी कलरफुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इस्तांबुल। सो अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर और आपने हमारी टर्की सीरीज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन गो बैक टू अवर चैनल एंड वॉच द टर्की सीरीज़ ऑफ द अनसीन प्लेसेस, जहां हमने एक्सप्लोर किए हैं सम ब्यूटीफुल प्लेसेस, ब्यूटीफुल लेक्स एंड सम हिडन जेम। चलते हमें नजर आया माटो रेस्टोरेंट, तो हमने सोचा वहां से करते हैं ब्रेकफास्ट टू फ्यूल अप द डे। Breakfast is here. You can see the menu with you, red sauce, black olives and oil, cheese, fresh salad, honey with cream, sauces. It's very refreshing and very healthy. ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद हमने अपना वॉक टूर स्टार्ट किया टुवर्ड्स गलाता टावर, जो कि हमारे होटल से सिर्फ 15 मिनट्स की डिस्टेंस पर था। वहाँ जाके हमने सबसे पहले लिया टिकट। तो वी विल रिकमेंड यू कि आप जाएं इन द मॉर्निंग एंड बाय द टिकट, अदरवाइज यू विल फाइंड अ लॉन्ग क्यू ओवर देयर, या फिर आप ऑनलाइन भी उसके टिकट परचेज कर सकते हैं। चेक किया जाता है आपका हेल्थ कोड, विच इज़ प्रोवाइडेड यू बाय पुटिंग द वैक्सीनेशन डिटेल्स एंड इट इज़ रिक्वायरमेंट of all closed places to enter by the government for the safety protocol। एंटर होते ही अंदर एक लिफ्ट मौजूद है जो कि आपको लेकर जाती है 7th फ्लोर तक। Elevator, you can see the miniature model of the whole Istanbul city, which is very beautiful and very artistic। There's also a screen over there which telling you the story of a legend, Hazarfan Ahmad Celebi, which allegedly flew with the handmade wings of his from Galata Tower। 7th फ्लोर से ऊपर 2 फ्लोर आप खुद चढ़कर जाते हैं सीढ़ियों से, जहां आपको मिलता है ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू ऑफ द होल सिटी ऑफ इस्तांबुल। Someone see the blue mosque at the right side and Hagia Sophia at the left side. Also you can see this Galata bridge. This 66-meter tall building, you can see the whole beautiful city of Istanbul
and take so many pictures with this amazing view. While the time was running out for me, there's no escape from the mess I made. But when you come, everything just turns around. I get stunned by your drum. I follow you into the sun, shooting rays like a shotgun. You gotta be my someone. इस्तांबुल सिटी का व्यू एंजॉय करने के बाद हम चले वापसी की तरफ, मगर वापस आपको उतरना पड़ता है सीढ़ियों से। देयर इज नो एलिवेटर टू टेक यू डाउन। नीचे जाकर एक सोवेनियर्स की छोटी सी शॉप है जहाँ से आप सोवेनियर्स भी ले सकते हैं एंड यू कैन बाय समथिंग फॉर योर लव्ड वंस। उसके बाद हम चले अपनी नई मंजिल की तरफ, विच इज़ द बलात, द कलरफुल डिस्ट्रिक्ट। Welcome to Travelsheesh. Today we are taking our ride towards Balat. ये थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, तो हमने कब क्यों ना फेरी राइड एंजॉय की जाए। Balat is situated in Fateh district of Istanbul. You can go there by bus, by tram and by ferry from Eminönü. So हमने चूज किया by ferry. Surrounded by these colorful houses. It is too wonderful to take a walk in between these colorful streets and take some very amazing pictures. It's a very picturesque place. I would definitely recommend you should go there and enjoy this colorful place. This place is also surrounded by cute cafes and coffee shops. तो हमने भी एक कैफे में बैठ के लंच किया क्योंकि हमें भूख लग चुकी थी। लंच के लिए हमने ऑर्डर किया चिकन चीज़ विद मशरूम्स एंड चिकन फेजिटा विद राइस। लंच करने के बाद और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम दोबारा निकले बाहर टू एक्सप्लोर द कलरफुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलात। यू कैन सी दिस कलरफुल अम्ब्रेलाज। इट इज़ ऑल सराउंडेड बाय कलरफुल वाइब्स। एक दफ़ा आप बाहर निकलते हैं, आप अपने आप को बहुत फ्रेश एंड वाइब्रेंट महसूस करते हैं, सराउंडेड बाय दिस कलरफुल थिंग्स। These are the colorful famous stairs जहाँ लोग जाते हैं स्पेशली फॉर द फोटो सेशन, और यहाँ आपको जगह ढूंढना वाकई ही मुश्किल होता है। लकीली आज थोड़ा रश कम था तो हमने वहाँ भी ली अपनी पिक्चर्स। साथ में एक कैफ़े भी मौजूद है, सो यू कैन सिट देयर एंड एंजॉय योर कॉफ़ी और टी। स्टेज से ऊपर जाने के बाद जगह जगह पर छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं जहां आप पिक्चर्स ले सकते हैं। So I would say it is a perfect spot for the photographers and the Instagrammers. इन कलरफुल स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने के साथ हमें अलचाती की बहुत याद आई। So if you are new to our channel and you haven't seen our previous videos, so please go to our channel and see the Turkey series in which we have covered the Alachati, Cappadocia and other unseen places. And if you like our content, please like, share, comment and subscribe to our channel for more travel videos. बलात एक्सप्लोर करने के बाद हम रात में पहुंचे तकसीम पर, और हम काफ़ी थक चुके थे और भूख भी लग गई थी, तो हम पहुंचे बुक्का रेस्टोरेंट फॉर आवर डिनर।
Our dinner is here. We have ordered lentil soup, grilled chicken, and stuffed mushroom, chicken and vegetable. Hukkabaz is a lavish restaurant which is famous for its food serving, special drink which served with a la casa de papel, or you can say bella ciao. It is a unique style for serving their drink. They put on the famous bella ciao mask and they serve your drink with the tongue and clap around, but definitely it will charge you very much. डिनर के बाद हम पहुंचे द फेमस हाफिज मुस्तफ़ा. इफ यू हैवंट हर्ड इट, you will definitely go there for the kunafa and baklava and all the traditional sweets of Turkey. इसके साथ ही करते हैं हम अपनी वीडियो को यहीं पे and stay tuned because next video will be for the second day of Istanbul and some exciting places.